Okay, so today's topic is going to be elbow joint. Okay, आज हम बेसिक एनाटॉमी के बारे में जानेंगे elbow joint के. So elbow joint अगर देखने जाए so it is a simple synovial joint. Okay, or else we can say it is not a simple synovial joint. It is a compound synovial joint. Okay, and it is a hinge variety of joint. Okay, then broad spectrum में अगर बात करने जाए, okay, so elbow joint के अंदर हमारे पास तीन main joints आते हैं. Okay, that is first is your humeroradial joint. Then we are having humeroulnar joint, and we are having proximal radioulnar joint. It is like humerus articulating with radius. Okay, or if you can say radius. Humerus articulating with ulna and radius articulating with ulna at the proximal aspect. Okay, at the elbow region. So overall, this is your elbow joint, which you can see over here. Okay. अभी इस एल्बो जॉइंट के अंदर जो तीन जॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए इट इज लाइक दिस. ओके, सो द थिंग विच यू कैन ऑब्जर्व ओवर एट द लेफ्ट साइड, so this is right side. Okay, so let us take it as lateral and medial. Okay, apart from right and left you can say this lateral and medial. Okay, so as you can see on the lateral aspect, so this is the structures which you can observe. Okay, radial fossa, then capitulum. These are the structures present in the humerus bone. This is humerus bone. Okay, this is humerus. This is head. This is radius, head of yeah. This is radius, and this one which you can observe over here. This is head of radius. Okay, and the thing which you can observe at the medial aspect, it is nothing but your ulna. Okay, and this is the trochlear notch of ulna. Okay, so हमारा रेडियल हमारा एल्बो जॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके, so let's dive deep into it. Okay, so firstly what we can see, that is articulating surfaces. Okay, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस की बात करना चाहे तो इंडिविजुअल बोन के हिसाब से देखते हैं. सो ह्यूमरस के अंदर जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं हमारे, दैट इज ट्रोक्लिया. It attaches at the trochlear notch of the ulna. Okay, then capitulum, it attaches to the radius. Okay, this is to the ulna. Then conoid and radial fossa. Okay, conoid fossa and radial fossa and olecranon fossa. Okay, these two are present in the anterior. This is present at the posterior aspect. यहाँ पे olecranon process आता है ulna का. Okay, as we can observe above in the diagram. Okay, then coming to the ulna. Ulna में हमारे पास we are having trochlear notch which attaches at the trochlea. Okay, and trochlear notch को अगर हम segregate करें more specifically, so it is olecranon process which is the posterior lip of the ulna. Okay, so जो समझ लीजिए एक this is ulna. Okay, एग्जाम्पल के तौर पे this is ulna, this is the posterior notch. Okay, and this is the anterior notch, or else we can say anterior process. So posteriorly we are having the olecranon process, and anteriorly we are having coronoid process. Then another articulating surface जो कि हर कोई भूल जाता है, ठीक है, that is radial notch. It is very important. Okay, radial notch, it is actually radial notch आपका अटैच होता है ulna के ऊपर. Okay, to create proximal radioulnar joint. Okay, proximal radioulnar joint बनाने के काम आता है. Okay, then coming to the radius. Okay, the lateral bone. Okay, of forearm. Head of radius obviously humeroradial joint बनाने के लिए काम आता है, humeroradial. Okay, then fova, it's superior surface of the head. ठीक है, fova जो कि अभी समझ लीजिए this is head of humerus. Okay, यहाँ पे this is humerus, this is head of humerus, head of humerus. Okay, so यहाँ पे there will be a structure which is known as fova. Okay, then articulating circumference. Okay, hey, they are saying it same only. Then coming to the joint capsules. Okay, joint capsules बहुत important रोल प्ले करते हैं
when we are talking about elbow joint, because elbow joint एक first of all it is a hinge joint. Elbow joint के अंदर बहुत ज़्यादा हम मूवमेंट तो देख नहीं सकते, बट इट इज़ मोस्टली यूज हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जॉइंट्स में से एक होता है. सो जो कैप्सूल है, कैप्सूल एल्बो जॉइंट की इंटीग्रिटी को कायम रखता है. ओके, सो इट एनक्लोजेस all the three articulation. Okay, and proximal attachment and distal attachment are the two concepts. Okay, so जो proximal attachment है, तो समझ लीजिए कि this is radius. Okay, sorry, this is humerus, this is radius, and this is ulna. Okay, और समझ लीजिए कि यस, सॉरी, ये आपकी जॉइंट कैप्सूल है. ओके, दिस इज योर कैप्सूल. ओके, सो जो प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट है इस चीज का, अभी देखिए, द प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट विल बी एट द सुपीरियर एंड डिस्टल एस्पेक्ट विल बी एट द इंफीरियर, राइट. सो यहाँ पे इट अटैचेस टू दी कोरोनाइड एंड रेडियल फोसा. ओके, जो हमने ऊपर मेंशन किया था, कोरोनाइड एंड रेडियल फोसा प्रेजेंट एट द ह्यूमरस. ओके, देन डिस्टली जो है, इट अटैचेस टू द ट्रोक्लियर नॉच. ओके, सो yeah, this was the boundaries, or else we can say attachment of the capsule. Okay, then coming to most important part, that is जो कि हमेशा आपको पूछेंगे, that is your ligaments. Okay, so these are the primary stabilizers. Okay, अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि we are having medial collateral ligament. Okay, इट इज अ ट्रायंगुलर लिगामेंट. इसके अंदर तीन फाइबर्स होते हैं. वन इज आई गेस सुपीरियर, हम कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ओके, लेट मी रिकॉल. It is not actually superior, it is actually anterior. Okay, then we are having posterior bundle. Okay, posterior fibers, anterior, posterior, and transverse. Okay, सो तीन फाइबर्स मिलके एक ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाता है. इज नथिंग बट योर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. व्हेन वी आर हैविंग लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ओके, जैसे मीडियल कोलैटरल था वैसे लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है. ओके, देन वी आर हैविंग एन्युलर लिगामेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. एन्युलर लिगामेंट अगर आप लिखना भूल गए तो एग्जामिनर आपको ये दो लिखने के ऊपर भी मार्क्स नहीं देगा. देन क्वाड्रेट लिगामेंट. ओके, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लिगामेंट. लिगामेंट सारे ही याद करो तो ही बेहतर है, बिकॉज आगे जाके बायोमेकेनिक्स में बहुत काम आता है. ओके, देन कमिंग टू द मूवमेंट्स. ओके, सो अभी एल्बो जो है, इट इज नॉट हैविंग 3 डिग्री ऑफ मोशन. ओके, इट इज हैविंग 2 डिग्री ऑफ मोशन. ओके, सो तो दो ही प्लेन्स में इसके मोशंस हो सकते हैं. ओके, सो flexion extension and supination pronation. Okay, so the flexion is caused by brachialis, bicep brachii. Okay, though it is a strong supinator, but yeah, it gives some amount of what we can say. It helps in the flexion of elbow. Okay, then brachioradialis, one of the important muscle. Okay, extension is caused due to tricep brachii and anconus. Anconus is a very small muscle. Okay, present at the posterior aspect. Okay, लोग भूल जाते हैं इसे याद करना, बट एल्कोनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सुपिनेटर, सुपिनेटर में सबको पता ही है, बाइसेप ब्रेका इज अ स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर. ओके, स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर. देन सुपिनेटर करके खुद एक मसल होता है, इंडिविजुअल मसल है हमारे बॉडी में. ओके, इन द फोर आर्म. एंड yes, we are having pronation or pronators. We are having pronator teres. Okay, नाम नहीं पता चल जाता है.
प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके, ये दो मसल तो आप बहुत इजीली याद कर सकोगे बिकॉज नाम नहीं पता चल जाता है कि व्हाट इज द एक्शन। ओके, देन कमिंग टू द नर्व सप्लाई। ओके, नर्व सप्लाई के अंदर वेरी सिंपल, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व एंड मीडियल नर्व, तीन मेन नर्व्स याद रख लिए। ठीक है, उतना काफी है। एक्चुअली जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, दैट इज योर क्यूबाइटल फोसा। ओके, क्यूबाइटल फोसा के अंदर फोर मेन कंटेंट्स होते हैं, उनमें से ही यहाँ पे दो है। ओके, क्यूबाइटल फोसा के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, देन कमिंग टू द I guess it is second last segment. Okay, bursa. So we are having subcutaneous bursa. Okay, it is present below the what we can say soft tissue present at the ulnar bursa. Okay, ulnar ये oligrenum area. Sorry, my mistake. It is a bursa which is present below soft tissue of oligrenum area. Okay, then it is subtendinous bursa. Okay, सबटेंडिनस बर्सा आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, ऑलिग्रेनल फोसा के जस्ट ऊपर होता है आपका सबटेंडिनस ऑलिग्रेनल बर्सा। ओके, देन सबक्यूटेनियस रेडियल बर्सा, इट इज मोर ओवर टू द आई विल से कि रेडियस के ऊपर ही होता है। ओके, आप अगर बरसा को स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, बट हाँ अगर एग्जाम में लिख के आते तो या एग्जामिनर विल थिंक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, सो आपके कुछ मार्क शायद बढ़ा सकता है बस लिखने के ऊपर से। देन कमिंग टू द कैरिंग एंगल। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इज कैरिंग एंगल। अभी बेसिकली होता क्या है, let me erase this thing. Yeah. कैरिंग एंगल आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपके ह्यूमरस से एक सुपीरियर एक्सेस से एक एक्सेस जा रहा है। ओके, एक एक्सेस पास हो रहा है आपके शोल्डर गट्स। ओके, एंड कंसिडर देयर इज अ इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट इन योर फोरआर्म। ओके, अब फोरआर्म में भी मोर स्पेसिफिकली कहना चाहते हो अल्नार एस्पेक्ट। ओके, वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आप इमेजिन कीजिए। ओके, यू आर कीपिंग योर व्हाट वी कैन से आर्म एंड फोर आर्म इन एनाटॉमिकल पोजिशन। ओके, एनाटॉमिकल पोजिशन में देखने के बाद वी कैन ऑब्जर्व दैट थिंग कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट एक्सिस। ओके, स्ट्रेट एक्सिस के साथ आपका जो एल्बो है, ओके, एल्बो इज क्रिएटिंग एन एंगल। ओके, सो दिस एंगल इज नोन एज कैरिंग एंगल। ओके, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बायोमैकेनिक्स में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये जेंडर वाइज डिफर करता है। मेल के अंदर लाइक इन मेल्स इट इज अराउंड 10 to 15 डिग्री एंड इन फीमेल्स इट इज ऑलवेज मोर देन 15। ओके, द रीजन फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो पेल्विस का रेशियो होता है, ओके, पेल्विस उनका वाइडर होता है, तो उसकी वजह से जो लाइन है वो ज़्यादा, और वी कैन से जो इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर, वो ज़्यादा ये हो जाती है, डिवेट हो जाती है लैटरली। ओके, इसके अंदर दो मेन और चीज़ें हैं, दैट इज क्यूबाइटस वल्गस एंड क्यूबाइटस वारस। एक सेकंड, ये
Yeah, this is cubitus valgus and cubitus valgus. Okay. सो क्यूबाइटस वल्गस जो होता है उसके अंदर जो कैरिंग एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके. एंड क्यूबाइटस वायरस जो होता है उसके अंदर एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ओके. क्यूबाइटस वायरस को हम एक और टर्म से लाइक पहचानते हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली इट इज नॉट अ टर्म, इट इज एक्चुअली अ डिफॉर्मिटी, not commonly found, but yeah, it is a deformity that is nothing but gun stock deformity. Okay. So yeah, this was kind of a clinical anatomy for you. Okay, carrying angle. And carrying angle actually biomechanics का concept में आता है. And this cubitus valgus and varus, it is yeah, clinical anatomy. So yeah, that's it for today. Okay, thank you.